Hi everyone. अब 8 बज गए हैं and we'll just start in a minute. Big fan भाई प्रणय सर प्लीज फॉलो कर दो. Big fan bro. भाई शीर्षासन सिखा दो. ओके लोग आ रहा है. Okay, I have sent the invite to Aakansha ma'am and abhi uh, she'll join shortly. She'll be with us. Hello, bro. Good evening. Hello, Rehan Khan. Good evening. I have joined. Jyoti joined. Hi, Ishu. Okay, I think join तो हो चुका है. Hello, ma'am. आप Hello. join हो गए हो क्या? Yeah, I'm there. Am I audible and visible, Shivang? Ma'am, audible तो हो but you're not visible. Okay, just wait. Let me join again. Yeah, sure. Accept. हाँ. Yeah, you're visible now, ma'am. But मैम अब आपका ऑडियो नहीं आ रहा है. Am I audible now? हाँ, अब आ रहे हो मैम. अब ऑडिबल हो. Audible and visible both? Yes, ma'am. Audible and visible both. Okay. Hello, Shivang. How are you? Okay. Hi, ma'am. I'm very good. आप कैसे हो? I'm also good. Okay. So अभी हमारे पास 22 व्यूज हैं, 23. तो स्टार्ट करते हैं मैम फिर. Yeah, sure. Sure. Uh, hello and welcome everyone to this Instagram series जहाँ पर almost हर हफ्ते we will invite some yoga experts, knowledgeable personalities and skilled practitioners to share their valuable insights on different aspects of yoga. तो
आज की हमारी थीम है एक्सप्लोरिंग द टेक्निकलिटीज ऑफ योगा। और जब भी टेक्निकलिटी वाली बातें आ जाती है ना, तो आई डोंट थिंक आकांक्षा, एटलीस्ट हमारे फील्ड, हमारे सर्कल में, डीएससीवी वाले सर्कल में, आकांक्षा मैम से ज्यादा टेक्निकल डिटेल आई गेस शायद ही किसी को हो। ऑफकोर्स होगी, बट आई डोंट नो हम लोगों में कोई जानता हो। तो जनरली हम नॉर्मल प्रैक्टिसेस करते हैं सब लोग, बट वी टेंड टू मिस आउट ऑन द स्मॉलर फाइनल टेक्निकल डिटेल्स। तो ये वाले सेशन का थीम यही रखा है कि आज हम थोड़े से फाइनल पॉइंट्स की तरफ जाएं एंड उन चीजों को डिस्कस करें। तो Yeah. हम सब तो आकांक्षा मैम को काफी अच्छे से जानते हैं, बट मैम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ टू द ऑडियंस, like how you started your journey into the yoga and how you progressed, how you got into it professionally. Sure, sure. Okay, so everyone, welcome. This side Aakansha. I prefer to say Aakansha Prajapati because generally people don't know कि आपका full name क्या है. So I prefer कि myself is Aakansha Prajapati. But if I talk about my yoga journey, it has been started in 2004. Actually, that was the time when I started as a yoga competition. जब हम लोग, I think it was in 4th or 5th class. So we just participated in a yoga competition as a group, and we गेट द फर्स्ट प्राइज। तो वो एक फर्स्ट प्राइमरी स्टेज था जब योगा को एज अ लाइफ में हमने स्पोर्ट की तरह स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट फ्रॉम 6 to 10 आई हैव प्लेड डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स इन योगा from 2006 to 2010. After that, due to 12th, I just rejected all the sports and yoga and all. उसके बाद मेरा जो बैकग्राउंड था वो कम्प्लीटली अलग था। दैट इज बीएससी फ्रॉम physics, chemistry, math, PCM. After that, I have done masters in physics. After that, I have done masters in yoga again. And right now, I am doing PhD in yoga. So basically, मेरा जैसे शिवांग ने बोला कि टेक्निकलिटीज ऑफ योगा की जब हम बात करते हैं, तो जनरली क्या होता है, जो लोग योग के फील्ड में बहुत पुराने हैं, लाइक 10-10 साल से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हठ योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर वो एनिशियंट टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, they are very good in their own practice, but they don't know one thing which is missing, कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू एज स्टूडेंट है, जिसको बहुत ज्यादा एनिशियंट चीजें समझ में नहीं आती हैं, जिसको बहुत ज्यादा थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझ में नहीं आता, उसको प्रैक्टिकली कैसे उन चीजों को समझाना है। तो व्हेन वी बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, बिकॉज आई हैव डन बीएससी एंड एमएससी, तो हम लोगों का फिजिक्स बैकग्राउंड होने की वजह से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज्यादा किया है कि हर एक चीज को प्रैक्टिकली हम कैसे समझाएं, इजीएस्ट वे में कैसे समझाएं। तो उन चीजों की वजह से जो एक कनेक्शन होता है कि आपने जो पढ़ा और आप जो समझा रहे हो, उन दोनों चीजों को कैसे आप कंबाइन करके सामने प्रेजेंट करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ योगा टीचर। इवन दो एज अ योगा स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व, बिकॉज प्रैक्टिकल में हम एक चीज समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एनी situation which is happening or anything, any discovery, even if you say, कोई भी डिस्कवरी जो होती है उसके पीछे का जो बेस है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। इफ यू जस्ट फॉरगेट द ऑब्जर्वेशन, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, you cannot go and discover something new. Like न्यूटन, एवरीवन नोज कि न्यूटन ने जो न्यूटन के लॉस बनाए थे, उसके सिर पे एप्पल गिरा एंड ही थॉट कि ये नीचे क्यों गिरा, एंड देन ही ट्राइड कि कुछ तो होगा इसके पीछे कि नीचे ही आया, ऊपर क्यों नहीं गया टूटने के बाद। तो वो एक ऑब्जर्वेशन था सिंपली, राइट। तो वैसे ही छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन वी हैव टू डू एज अ योगा प्रैक्टिशनर एंड एज अ योगा टीचर ऑल्सो, बिकॉज जो लोग पुराने हैं वो लोग इस चीज को मिस आउट करते हैं, और जो लोग नए हैं वो इस चीज को बहुत ज्यादा हाइपोथेसाइज कर देते हैं और वो पुरानी चीजों का एसेंस खो देते हैं। तो योग का मजा तब है जब आप पुराना जो है उसके एसेंस को बढ़ाएं और मॉडर्न जो है उसकी टेक्निकलिटीज को यूज करके उसको एनहांस करने की कोशिश करें। जनरली क्या होता है कि लोग या तो ये वाला पक्ष चुन लेते हैं या दूसरा पक्ष चुन लेते हैं। ये जनरली प्रेफर कि नहीं, या तो हम केवल एनिशियंट को पकड़ेंगे या हम केवल मॉडर्न को पकड़ेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी, what is the best way to go through the journey of yoga and to understand the technicalities is to accept that modern science or modern theories or modern developments are very very helpful
in our yoga practices. But do not forget that कि आपका जो योग है वो केवल उन टेक्निकलिटीज पे डिपेंडेंट नहीं है. It is much more than that. You can take your yoga practice to next level if you are using the technical things. Okay, but if you have to go beyond that also, कि हमने फर्स्ट स्टेप से सेकंड अचीव कर लिया, सेकंड से थर्ड अचीव कर लिया, बट इफ यू वांट कि हमें वो 100th लेवल अचीव करना है ऑफ योर कॉन्शियसनेस, देन यू शुड हैव टू फॉलो द ओल्ड वन. ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जैसे छोटे छोटे से कुछ ऑब्जर्वेशन हैं मेरे पर्सनल अपनी प्रैक्टिस के. इफ आई शेयर विद यू, व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स ऑफ योगा इन 2017, आई वाज नॉट बीन एबल टू डू बकासन. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि पाम बैलेंसिंग मुझसे नहीं होगी. एंड आई वाज फ्रॉम दोज स्टूडेंट कि सब लोग लाइक होता है ना कि बॉयज गर्ल्स सबका कंबाइंड चल रहा है, तो बॉयज लोग कर रहे हैं, उनको देख के मुझे ऐसा लगता था नहीं मैं हेजिटेट करूंगी और मैं इनके सामने नहीं करूंगी, मैं गिर जाऊंगी तो बेइज्जती हो जाएगी. मतलब बहुत नेगेटिव फील था, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया. बट व्हेन आई एंटर्ड इन पीएचडी एंड आई हैव टू टीच, आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस अगेन, ओनली बिकॉज एक था कि नहीं अब हमें आगे बढ़ना है. नाउ आई हैव टू स्टार्ट अगेन. तो कोविड के बाद फ्रॉम 2021 व्हेन आई स्टार्टेड माय पीएचडी, I started my self practice again, not any teacher, not under any teacher, and that was the turning point when I actually started my self practice. And that is why मैं अपने हर एक स्टूडेंट को भी encourage करती हूँ कि even though you are learning with me, even though you are going to any yoga center, even though you are learning from YouTube or anything else, do not forget your self practice, because if you go through the self practice daily, even though daily नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब टाइम मिल पा रहा है हफ्ते में एक बार इट्स ओके, हफ्ते में 2 बार इट्स ओके, डेली इट्स वेरी वेरी गुड, हर दिन में 3 बार इट्स लाइक ऑसम. ओके, बट इफ यू डोंट हैव टाइम, एटलीस्ट ट्राई टू डू फॉर 1 day 2 day in a week. Okay, because as a teacher when you enter in this field you forget the time for your own practice, and that is the time of your decay. जब हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी भी नहीं होती. वी हैव टू कोप अप दोज थिंग्स जो हमारा नहीं हो रहा है. वी शुड नॉट हैव टू लीव दैट कि अच्छा ये नहीं होता है. एंड आई सी सो मेनी रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑल्सो कि पीपल आर शोइंग आई एम अ योगा टीचर फ्रॉम लास्ट 10 years एंड आई कैन नॉट डू बकासन, एंड इट इज ओके. इट इज नॉट ओके. कैन यू सी, वी हैव सच आइडियल्स लाइक BKS Iyengar sir. He was 60 years old when he was taking classes, and he was being able to perform each and everything. And I was so fascinated to see that video on YouTube that he is 60 years old. He is teaching Ashtanga series to all the people, and he is showing them how to do handstand. And then basically he is demonstrating. And if a 60-year person will be demonstrating you to do Shirshasana and you are 20 years old, won't you be fascinated कि लाइक वो बंदा कर सकता है तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, वो सीख सकता है तो हम क्यों नहीं सीख सकते. डेफिनेटली, क्योंकि हाँ या कंटिन्यू मैम, या नहीं यू कैन टॉक. या सो आपने ये 2 चीजें जो छिड़ी है ना, दे आर वेरी रिलेटेबल टू मी. तो बीके आयंगर वाला, इवन फॉर माई सेल्फ 12th के बाद जब मैंने 1 साल ड्रॉप किया था, देन आई सॉ बीके आयंगर फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड वो 60 साल के प्रॉपर बूढ़े आदमी लगते हैं, और मैंने कहा हे भगवान, मतलब इतना बुढ़ा होके, मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर. बट माय थॉट वाज यार बुढ़ा होके इतना कर सकता, मैं तो इतना यंग हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके सामने. तो उस पॉइंट से तो मैं भी बहुत मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड था. एंड कहीं ना कहीं मैं भी श्रेय देता हूँ अपनी योगा जर्नी का श्री बीके अयंगर जी को. एंड सेकंड वाला मैम आपने ये बोला था कि एमएससी में आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करते थे, बट जब आपको टीच करने का जब बारी आई, देन यू रियलाइज कि हाँ मुझे खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब चीजों को जाके समझना पड़ेगा. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल फॉर मी, क्योंकि अभी जैसे मेरी मास्टर्स अभी मुरारजी से चल रही है, शाम के टाइम फ्री होता हूँ, तो आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट टेकिंग क्लासेस वगैरह. बट बीएससी में थे तो स्टूडेंट थे, तो ऐसा सेल्फ प्रैक्टिस का आते नहीं कि अच्छा जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो जो फ्लो में आता है वो चलता ही जाता है, खुद पे मतलब ध्यान ही नहीं जाता है. तो अभी जब पढ़ाने की जब बात आती है ना, तब समझ में आता है कि हाँ हमें कितना ज्यादा सीखना है.
और आई एम वेरी एग्जैक्टली। ग्लैड मैम कि आपने ये वाला ये खुद पे इम्प्रूवमेंट वाला किया, खुद को नॉलेजेबल और ज्यादा करने का किया, क्योंकि देयर आर सर्टेन टीचर्स जो इसके बावजूद भी दे गो विद अ सर्टेन फ्लो की ऊपर ऊपर से करा दिया, वही मोनोटोनस करते जा रहे हैं। एंड ऑनेस्टली फिर वो योगा का ओवरऑल एक्सपीरियंस भी पूरी क्लास के लिए ही मतलब डाउन साइड सा हो जाता है फिर। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। आपने आपने तो हमारी कोई बस एक प्रैक्टिकल क्लास ली नहीं थी, बट बाकी जितना भी आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस का रिस्पॉन्स आया था ना, इट वाज कि आकांक्षा मैम इज अमेजिंग यार, मतलब क्या टेक्निकल नॉलेज है उनकी। एंड हमें बुरा लगता था कि यार हमें भी कोई एक क्लास मिल जाए आपकी। एंड वंस आई हर्ड यू, जब आप आई गेस एमएससी की क्लास ले रहे थे षटकर्मा वाला, और वस्त्र हम्म धोती चल रहा था, हम्म एंड आप जो इतनी मतलब आई remember। डिटेल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, ये लग रहा था कि हाँ यार मैं तो आज ही कर लूंगा। हमें वो मौका नहीं मिल पाया था। नहीं, नॉट ऑफेंस, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट हम लोग का पूरा सेमेस्टर एंड हो गया, काफी बच्चों का नहीं हो पाया था वस्तु धोती वगैरह, बट आई एम श्योर अगर आप जैसा कोई टीचर हाथ आ जाता ना, तो हो जाता, हमारे 2-3 दिन में ही हो जाता। एनीवेज नहीं मैंने भी काफी सारा रेंट कर लिया। नहीं तो नहीं, स्टार्ट it करते it सेशन को। happens, it happens, it happens, it happens. Basically, या what my point is कि मेरी जो अपनी पर्सनल जर्नी रही है इस फील्ड में, किसी भी रीजन से, चाहे वो किसी पर्सनल रीजन से रहा हो कि मैंने अपना लाइन चेंज किया एमएससी के बाद, चाहे वो ये कह लो कि एक हम योग में और यहाँ पे देव संस्कृति में जैसे हम बोलते हैं ना कि गुरुदेव आपको बुलाते हैं, आप यहाँ आते नहीं है, आपको बुलाया जाता है। सो आई बिलीव दैट थॉट फ्रॉम वेरी अर्ली कि हम अपनी लाइफ में जहां भी जाते हैं, हमारा जो लाइफ का नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो हमारी चॉइस नहीं होती, वहां पे हमें ले जाया जाता है, बिकॉज दैट इज अवर लाइक, कह सकते हो कि हमें अपने जो कर्म क्षेत्र को पाना है, वो कर्म क्षेत्र हमारा हमें मिलेगा तभी जब हम उस समय सीमा के अंतर और उस समय सीमा के साथ आगे की तरफ चलते हैं। जैसे एक नदी होती है ना, वो लगातार आगे की तरफ चलती है, वो कभी पीछे पलट के नहीं देखती, वैसे हमारे जीवन का समय होता है, वो लगातार आगे चलता है, कभी पीछे पलट के नहीं देखता। और वो आगे चलते चलते पीछे की चीजें साथ लेके तो चल सकता है, लेकिन पीछे पलट के जाए तो वो विध्वंस मचा देता है। तो इस चीज को मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, और इसी वजह से शायद मतलब एक बैकड्रॉप था कि हाँ मास्टर्स कर रहे हैं योगा से, लेकिन शायद फर्स्ट ईयर तक, एमए योग के फर्स्ट ईयर तक ये था एक माइंडसेट कि नहीं, फिजिक्स का जो मेरा एक था बैकग्राउंड, मुझे उसी को आगे लेके चलना है। बट टर्निंग पॉइंट वाज दैट कि मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट बहुत पहले से है, लाइक मैं कहूंगी कि बचपन से ही है, और मुझे ऑलमोस्ट 10 years हो चुके हैं पढ़ाते हुए। सन 2012 से मैं टीचिंग कर रही हूँ एज अ ट्यूटर फॉर 11th 12th स्टूडेंट्स फिजिक्स एंड मैथ। तो उसकी वजह से मेरे को एक कीड़ा है पढ़ाने का, तो मुझे ऐसा लगता है भले खाना ना मिले लेकिन मुझे पढ़ाने को मिलता है। उसकी वजह से अपनी जो कमियां हैं उन कमियों पे मैं काम करती रहती हूँ कंटिन्यूस, एंड आई प्रेफर टू टेल दिस थिंग टू एवरी स्टूडेंट कि आज से 5 साल पहले मैं कहाँ थी एंड हाउ आई एम राइट नाउ आफ्टर 5 years। तो अगर 5 साल में मैं इतना कर सकती हूँ ना, यू कैन ऑल्सो डू, because what we are doing is we are living a journey, and another person can listen to that, can see that, and they can motivate themselves. They should not have to follow me कि नहीं हम तो फैन हैं आपके, आप बहुत अच्छे हैं। नो, डोंट फॉलो मी, आई नेवर सजेस्ट कि आप किसी को फॉलो करो, मैं भी किसी को फॉलो नहीं करती। बट यस, ऑलवेज गेट मोटिवेटेड बाय अदर पर्सन इफ यू सी समवन लाइक दिस। और एज आई पर्सनली थॉट, जैसे अभी शिवांग ने भी बोला कि 60 years इज नॉट अ लाइक, 60 years में आजकल लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बिस्तर पकड़ने वाले हो जाते हैं। और 60 years में अगर कोई इंसान इतना केपेबल है कि वो एक मोटी सी तोन के साथ भी क्लास ले रहा है, हैंड स्टैंड करके दिखा रहा है, हेड स्टैंड करके दिखा रहा है, तो अभी तो हमारी एज 30 भी नहीं हुई है, या 26 27। अगर हम अपने आप को टाइम दें, देर इज वन मोर इम्पोर्टेंट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। अगर हम अपने आप को एक टाइम दें और उस टाइम में कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, वी कैन अचीव दैट। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड, वी नीड एवरीथिंग सो अर्ली, लाइक समवन वांट कि हमारा पश्चिमोत्तानासन 2 दिन में लग जाए, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। समवन वांट कि हमारा हैंड स्टैंड 1 महीने में लग जाए, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरी पर्सन बॉडी इज डिफरेंट, एवरी पर्सन
ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, एवरी पर्सन स्लीपिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, उनका थिंकिंग पैटर्न अलग है, उनका चीजों को परसीव करने का तरीका अलग है. सो व्हेन एवरीथिंग इज डिफरेंट, हाउ कैन यू से कि उस बंदे ने तो 2 दिन में अचीव कर लिया, मुझे भी 2 दिन में करना है? नहीं सर. बट यस, यू कैन डू दिस थिंग कि अगर नहीं हो रहा है, जस्ट डिसाइड दैट कि आपको करना है कि नहीं करना है, अचीव करना है कि नहीं. इफ यू हैव डिसाइडेड ना कि अचीव करना है, so the right path will come to you anyhow. You just have to be consistent with that thought कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे like if I share my recent experience, there is one asana, एक पाद बकासन, which we say, and from 2017 when I attended my masters in yoga, I just see some person of my class doing एक पाद बकासन, and I was so fascinated. यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, मतलब एक पैर आगे रखा है, दूसरा पैर ऐसे पीछे उठा लिया बिल्कुल. बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इवन बकासन. तो एक पाद बकासन तो बहुत दूर की बात है, कोर स्ट्रेंथ चाहिए एंड नो कोर स्ट्रेंथ वॉज देयर. तो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट. और उसके बाद मैं कुछ स्टेटमेंट इस तरह का यूज करती थी बाकी लोगों के सामने कि सी, हैंड स्टैंड करना जरूरी थोड़ी है. कौन से एनिशियंट टेक्स्ट में लिखा है कि हैंड स्टैंड करे बिना हमारी योगा प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी. इवन दो आई हैव सम अदर प्रैक्टिसेस आल्सो. आई बिलीव इन कर्मा, I believe in pranayam, I believe in samadhi, and all that concept, they are connected to me in an other perspective, but only related to asana, because when we talk about technical thing in yoga, asana is the primary one. And if you have not achieved any asana but it is still there, you haven't got to that position, आपका एक बार वकासन होने लगा है, आपके दिमाग में ना वो कंटिन्यूअसली स्टिक रहा है, कंटिन्यूअसली घूमता रहा है. एंड इवन इफ यू गो फॉर प्राणायाम प्रैक्टिस, योर जो मनस स्थिति है ना हमारी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि हमारे जो एक इच्छा है दैट इज स्टिल देयर कि यार ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली दिमाग में घूमता है. एंड दैट पॉइंट व्हेन यू अचीव बाय एनी हाउ, बाय लाइक सपोर्ट और बाय समवन, बाय सम अदर पर्सन्स हेल्प, व्हेन the day comes कि आपने वो आसना अचीव कर, that goes off from your mind. So I see that thing, like I see for asanas particularly, we have to practice each and every asana which we cannot do, because that day जब हम उसको अचीव कर लेंगे, that day will be the last day of that thought with that asana, and we will move one step further, right? Because that happens with me on that day when I was preparing myself last 4 months back. I was preparing and reading because now my practice method has completely been changed. पहले हमारी प्रैक्टिस क्या होती थी, औरों को देख देख के हम लोग कोशिश करते थे, पूछते थे कैसे करें कैसे करें. बट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू माय ओन अप्रोच. गो फॉर द स्टडी, read a lot, observe a lot, and make your own points. Try to understand जो पर्सन उसको कर पा रहा है वो किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को यूज करके उसको कर पा रहा है. And when we are talking about asanas, it is only the muscular contractions and the focus of your brain on your muscles, because we are very unaware with the muscular attainment, muscular awareness. Like we are not even aware about the diaphragm. So many persons are there who are teaching yoga, who are doing yoga, but they cannot feel their own diaphragm properly because they do not know कि diaphragm का location क्या है, anatomically क्या है. So when we go into yeah, when we go into that कि अच्छा पर्टिकुलर ये लोकेशन है अपनी बॉडी पे, हम ऑब्जर्व करके देखें कि अच्छा ये वाला पोर्शन है, we have to place the palm, we have to spursh, it is known as a spursh mudra, when we just join all the fingers, all the thumb, and we just place it simply on some place. So that will be known as spursh mudra, and this is like a sensing organ of your body. Wherever you place this, your brain will automatically focus on that area. So when we place it right under the chest, in this place, I'll just show you. In this place, like there is a portion which is known as your ribs. You can feel that by touching your fingers like that. And when you place your palms here, you can feel there is something balloon-like structure which can expand and contract. So when once you have felt, okay, there is something कि यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसा गोल सा है जो फूल रहा है, inhale करने पे और exhale करने पे contract हो रहा है, and you practice pranayam with that sparsh mudra,
your brain starts focusing on that. And after a particular time of practice, आपको स्पर्श करने की जरूरत नहीं है. You just give command to your brain that inhale on the frontal lobe of lower side of the lung, and your lower side of the lung will expand and contract. That is the, you can say, control over your muscular structure, control over your own body, which is like similar to knowledge, because we have four types of knowledge. And again, in Madhya Noli, you have to contract from both sides. In Vam Noli, you have to contract left first, right after. In Dakshin Noli, you have to contract right first, left after. तो ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है, केवल और केवल ब्रेन का कनेक्शन है आपके मस्कुलर ऑर्गन्स. तो व्हेन यू विल बी एबल कि आपने इधर से कमांड दिया जस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिस मसल, और आपके ब्रेन को एक्चुअल में पता है कि वो मसल कहाँ से कहाँ तक है, then your body will be allowing you to go into that posture, to go into Noli Kriya, to hold the Gyan Bandh or everything. And the day when you will achieve that physical thing, that physical practice, which is being, you have been fascinated by that practice from a long time, you will just cut off the connection with that. Because as I was discussing, my own experience of last 4 months, I have read a lot about Ekpad Bakasana. I have understood each and everything, which muscle we should have to contract and which we have to work on. And I have find out some similar positions. जैसा Ekpad Bakasana है, उससे similar position जो मैं support के साथ कर सकती हूँ. I have started practicing them. I have visualizing them in my brain that I am doing it. और कोई भी एक वीडियो ऐसा मुझे दिखा कि हाँ कोई पर्सन कर रहा है, तो I just save that. I have watched one single video almost 100 times. Or more than I think 100 times. I have just saved one video of Ekpad Bakasan, and I have observed that person doing Ekpad Bakasan more than I think 100 or 200 times. I have been concentrating which muscle he is contracting, how he is lifting the leg, and I will be imagining myself to doing the same. And you will be amazed by listening this, and it is 100% true even. The first day when I actually practiced the Ekpad Bakasana with my blocks, the yoga blocks, because I feel मेरा हाथ का जो length है वो short है, leg थोड़ा ज़्यादा है. So whenever I go for palm balancing, I prefer कि मैं हाथों के नीचे को रख लूँ, so that my body will be much more balanced biomechanically. So when I tried first time to do actually Ekpad Bakasana, I was amazed myself because मेरा leg automatically ऐसे ऊपर चला, and I was like, I hold it 10 to 15 seconds first time when I did this. And after that, I just come back. I opened my camera. I recorded myself 10 to 15 times, corrected my position again and again and again. And approximately 3 weeks, I practiced that particular thing daily, almost daily. And there was a time when this portion of my elbow, which is known as bicep or tricep area, it was completely swollen क्योंकि continuous practice की वजह से muscular जो structure है that was overused. But I didn't skip my practice. एक वो जुनून होता है ना कि नहीं मैंने अचीव कर लिया तो अब करना है, बिल्कुल होल्ड करना है. 3 weeks तक मैंने continuously practice किया. And third week was that when I was able to do it, each and every time I tried, I did. Each and every time I tried, I did. And I can hold it as much as I want, not as much as my body is allowing. What we are doing wrong is हम जैसे ही achieve कर लेते हैं हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं. And what we should have to practice according to me is achieve कर लिया, it's a good thing, but go for continuous practice until when you can hold that position according to your will, not according to the capacity of, because everything is controlled from here. There is one person in Instagram, you can search that, there is some yes.yoga is the Instagram handle, and he has achieved I think 3 world records this International Yoga Day. And वो गिनीज वर्ल्ड he रिकॉर्ड has वाला. holded the plank position for I think 4 hours approximately. Chakrasan for 3 hours. We cannot even hold for 10 seconds, you know. And if you listen to him, he also said the same thing. Everything is controlled from here. So we have to control this. And all this, if you go again into the yoga text,
yoga text again saying the same, that everything you have to control your manasthiti, right? And when you will be controlling this, like when we are going for what we say it is, I'm forgetting the name, like to not go for external things, right? Right. There is someone, Dubai yoga instructor. He is the one. Yes, yoga. Okay. So there we have to just restrict and cut everything else from the brain, which is going out. And that can be even the practice of yogasana. Because if your man is not still, your pran cannot be still, right? तो मन को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करना है, और शरीर को स्थिर करने के लिए ही शरीर की स्थिति को दृढ़ करने के लिए आसनों का अभ्यास होता है, जैसा पतंजलि योग सूत्र में भी कहा। तो वो आसनों का अभ्यास जो है उसका पर्सपेक्टिव हमने गलत ले लिया। टेक्निकलिटीज को यूज करो, अचीव करो, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम अपनी विल तक पहुंचो। अपनी विल तक जब उसको कंट्रोल कर पाओ ना, यू विल लेफ्ट दैट ऑन दैट डे, योर ब्रेन विल नॉट गो फॉर दैट। लेकिन हाँ, अगर स्टिल यू हैव सो मेनी आसनास इन योर माइंड कि नहीं ये भी करना है, ये होता नहीं है, ये हो नहीं रहा है, और उसके बाद भी यू आर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, यू कैन नॉट फोकस इवन ऑन योर ब्रेथ। एंड प्राणों का आयाम बढ़ाना तो बहुत दूर की बात, हम तो श्वास आयाम करते हैं, हम केवल श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हैं, ब्रेथ पे ध्यान। When we are talking about pran is much more deeper than your shwas. Pran is the essence of your breath. That was so we are deep, not man, being that able you to just do. said. Yeah, because Yeah, you just said see, ना श्वास का ही करते हैं, that is so true. yeah, because श्वास प्रश्वास एक अलग चीज है। अगर प्राण और श्वास सेम होता तो उसको हम दो अलग नाम नहीं देते। ये हाथ में 5 फिंगर्स हैं तो ये 5 इसलिए क्योंकि 5 हैं अलग अलग। अगर एक ही काम होता तो ये एक ही होता, 5 नहीं होते। We need that. That's why they are different. Similarly, prana and shwas, they both are different. So when we think, when we observe each and everything by their name very carefully, we can understand everything very carefully. Similarly, there are so many asanas. Like I try to teach some people sometime कि जो आसनों का नाम हो उस पे फोकस किया, because that name is giving you the essence of that asana. Like if you are saying Paschimottanasana, what is the meaning of that? What is the meaning of that name? Paschim is referring to the posterior part. Uttan is referring for lengthening, right? So Paschimottan is basically for lengthening your posterior muscular structure. But what we are doing, we are surging the back down to touch the head of the knee, and that is not increasing the length of your posterior muscles, that is decreasing even the length. So we have to stretch the spine front, not surging the spine down. And that whole thing we can understand only by the name of that asana. So when we are talking about technicalities, every name in the yoga practice has its own technical meaning. Like when we go for physics, when we go into mechanics, there are so many names, like liver system. What is the meaning of liver? There will be some base and something will be like this, which is rounding around this base, up and down, up and down. There is one weight on the left side, one weight on the right side, or it can be both on the other side. But main चीज क्या है कि उसका नाम है पर्टिकुलर, उस नाम से रिलेटेड उसका एक कंसेप्ट डेवलप। What we are mistaken nowadays as a modern so-called modern people is हम उन technicalities का नाम ही बदल देते हैं, तो we do not understand. Like Parvatasana is referring for, Parvat means we know mountain. What is mountains? What are the mountains referring for? Mountains are referring for lifting the peak high. Peak should be high. But when we are doing Parvatasana, what we are focusing on, touch the head on the floor. We are not focusing on lifting the tailbone up. But when we are doing Parvatasana, this is your tailbone. This is the portion of your hip, basically, patak, the center of your body. You should have to lift that portion as high as you can, like a mountain, like a parvat. That is referring to Parvatasana. And why? Because that can
create the air pressure difference in both areas, up and down, front and back. Similarly, when we are practicing this, we can create that difference in our posterior and anterior body, in our medial and lateral body. But we have to feel the essence of Parvatasana. But what we are focusing on is stretch the shoulders down, arch the back, and put the head down. And buttocks should go down. No, no problem. But my approach is that if you are going into the names, if you are practicing the names and observing them very carefully, you can go so much deeper into them without being disturbed by any other. That is my perspective for the technicalities of yoga. Okay, other than this, if someone have any questions, they can ask. Because if I will keep talking, I can talk for 4 to 5 and I don't know how much I not to stop. आया हमने वैसे कलेक्ट किए थे क्वेश्चंस वगैरह, कुछ लोगों के आए थे एंड कुछ हमने प्रिपेयर भी किए थे, बट आई डोंट थिंक अगर वो पूछते थे ना तो आपने जो इतने सारे वैल्यूएबल इनसाइट्स है ना, आई डोंट थिंक ये वाले कवर हो पाते. तो इट्स लाइक वेरी गुड कि आप अपने आप से इतने बोल देते हैं. तो आई एम कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा ब्लोन अवे. आपने जैसा प्राणायाम को बताया था ना कि हम प्राणों तो भूल जाओ, श्वास पे करते हैं. दैट इज सो ट्रू, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्लास में भी करते हैं ना तो आई नेवर थॉट लाइक दैट कि हाँ यार श्वास पर ही रह जाता है, प्राण तो आ ही नहीं पाते हैं कभी, इतना डीप तो कभी सोचे नहीं. तो लाइक इट्स वेरी अमेजिंग कि मतलब आप अपने आप ही सारी चीजें करके करते जा रहे हो. अदरवाइज जैसे वी हैव सम क्वेश्चंस. अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट. या, सो लेट्स स्टार्ट विथ योगा हैज लाइक जो मॉडर्न वाला योगा है, मॉडर्न योगा हैज वेरियस स्टाइल्स लाइक विन्यास, हठ एंड योग. ओरिजिनली तो वी नो कि each and every type is very different, बट मॉडर्न यूजेज एंड प्रैक्टिस में ये जो विन्यास, हठ एंड अष्टांग है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड सजेस्ट विच स्टाइल माइट बी सुटेबल फॉर डिफरेंट फिटनेस गोल्स? Okay, so basically when we are talking about hatha yoga, it is an holistic approach, because when you are practicing hatha yoga, it is not only dependent on asanas and not so much typical asanas. Hatha yoga is basically focused on movements, smooth movements like sukshma vyayam, which are being preferred by Dhirendra Brahmachari ji, or stukh asanas type like sitting posture and something. But when we are going into Ashtanga, Ashtanga is what I feel basically for building the strength of your muscular structure. Like if you go for some karate practice, kung fu practice, or some tai chi practice in China, they all are the mixture of all these, because they have been practicing the muscular structure strength, they have been practicing the meditation, they have been practicing the concentration skill, because they can even keep one feet down on one bottle and they can stand straight. We cannot. They can inhale so much deep, they can exhale so much deep, and they can create the environment from the palms and push that to keep the air particles for that energy कि वो दूर से push कर देंगे. They can give you the pressure from non-contact force. They are able to, because उनकी practice है. तो अष्टांगा practice जो है वो very much similar to that strength building, which is also known as Kalaripattu, if you know. It is the martial arts ancient technique of India, right? Yeah, martial arts style. Okay, so that is very much similar to Kalaripattu. And there is one more thing, if you know about that. The एक लकड़ी का दंड टाइप का होता है, and we just move it like this to increase the strength of arms. Generally जो पहलवान लोग होते हैं वो यूज करते हैं इसको, मुद्गर बोलते हैं उसको ना. तो ये इंडिया की पुरानी प्रैक्टिस है. हाँ, ये जितना भी ये है पूरा का पूरा, ये सभी आपका अष्टांग योग के थ्रू, मतलब जो अष्टांगा प्रैक्टिस है, नॉट अष्टांग योग, अष्टांगा जो प्रैक्टिस है, सॉरी करेक्शन, वो अष्टांगा प्रैक्टिस के थ्रू आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होने लगे. बट एक उसमें प्रॉब्लम पता है क्या आता है, जब हम स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात करते हैं, बॉयज कैन डू जनरली, राइट, उनका आर्म स्ट्रेंथ थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो चतुरंगा दंडासना और
दंडासना, प्लैंक पोज, हाफ प्लैंक, वो सब इजीली कर पाते हैं. गर्ल्स कैन नॉट डू, क्योंकि गर्ल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नेचुरली ऐसा डेवलप है कि हिप पोर्शन थोड़ा सा हेवी होता है, चेस्ट पोर्शन थोड़ा सा नैरो होता है कंपैरेटिवली. तो बायोमैकेनिकली अगर देखा जाए तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बुटक की साइड पे ज्यादा रहेगा, बैक आर्च रहेगा. बैक आर्च रहेगा तो दे कैन नॉट टक द कोर इन. कोर टक नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस बॉडी का जो आगे नहीं आ पाएगा. सो दे नीड सपोर्ट फॉर गोइंग इनटू चतुरंगा दंडासना, फॉर गोइंग इनटू दंडासना, और फॉर प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग, राइट. तो उसके लिए आपका जो विन्यासा में हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, लाइक वी यूज बेल्ट, we use block, we use wheel, we use pillows. So many things are being used in vinyasa. So they are for increasing the strength with support. What I see vinyasa is. But if someone is able, if someone is practicing from a long time and he is able to do, then he can do all that thing in a flow without the support. That is known as vinyasa. So if someone is starting, they should have to start with Hatha Yoga. If someone is on upper level a little bit, he has achieved little bit of strength, bit of control over the mind, कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसको चूज कर पाए. हमें हर चीज हमारे लिए नहीं है, हर एक प्रैक्टिस हमारे लिए नहीं है. हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कब करना है. There will be one right time for everything. So second, you have to go for Ashtanga with Hatha Yoga. Do not left the Hatha behind. कि ऐसा नहीं होना चाहिए आगे का पढ़ते जाओ पीछे का सफा करते जाओ, है ना. आगे का भी पढ़ते जाओ पीछे का भी लेके चलते जाओ. तो हटा प्रैक्टिस के साथ साथ you have to involve Ashtanga in your practice after some years, and when you are fluent in Ashtanga practice, then you can try the Vinyasa. That is my approach. Even because if your body is not flexible, if you do not have the strength and you are trying to do Vinyasa, like you are trying to go from Salam Shirshasana to Niralam Shirshasana, आपकी body गिर जाएगी because you are not that much strengthened your muscular structure. So you should have to go step by step. Yeah. तो मतलब like start from the hatha, progress towards vinyasa, and finally फिर you go for vinyasa. Yeah. Okay. According to me, it cannot be universal. Okay. I'm sure. Yeah. So next Okay. question है We have to clear the statement because as a research scholar, it is हमें सिखाया जाता है कि you cannot give the proper statement क्योंकि सब कुछ चीजें 100% ट्रू नहीं होती है ना. अच्छा हाँ. अच्छा मैम इससे मुझे एक क्वेश्चन ये याद आ रहा है. आपने अभी जो स्पर्श वाला पूरा बताया था स्पर्श मुद्रा का, इट रिमाइंडेड मी ऑफ योग निद्रा. जैसे जब स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने डेवलप किया था तो ही सेड कि उसकी ओरिजिन्स एक तांत्रिक प्रैक्टिस में थी जिसमें दे यूज टू टच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और उस पर फोकस करवाते थे. तो मुझे उससे थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी लगी. और मैं आपने ये वाला स्पर्श मुद्रा मतलब कहाँ से सीखा, कहाँ से जाना इसके बारे में? ये पर्टिकुलर जो स्पर्श मुद्रा वाला है और जो सेक्शनल ब्रीदिंग की मैं बात कर रही थी जिसको हम विभाग प्राणायाम बोलते हैं, you will find out that in Gitananda yoga tradition, which is basically belongs to Pondicherry. Abhi right now this tradition has been followed by Dr. Anand Bal Yogi Bhavnani ji, who is actually MD, who is actually a doctor, medicine doctor, but after that he has become a yoga therapist because उनके जो फादर हैं वो he was Gitananda जी. तो उनकी जो अम्मा है, उनके जो पिताजी हैं वो उस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे. He was a doctor completely, and now he is doing to proceed all the other. So I have connected with those persons also. That's why I know, and they are very amazing persons. He is like very down to earth. He is like so knowledgeable and even 0% ego. He is very awesome. You can search for Dr. Anand Bal Yogi Bhavnani. You can, yeah, Gitananda yoga tradition. And there is one book of yoga therapy by Dr. Anand Bal Yogi Bhavnani. If someone is interested in yoga therapy, that how you have to treat with yoga practices some person, you can go. You should have to go for that book. Yoga therapy by Dr. Anand Ananda Bal Yogi Bala Yogi Bhavnani Bhawani. He's very awesome. Yeah.
इनका नाम पहली बार सुन रहा हूँ सरप्राइजिंगली मैं। हाँ, इट हैपेंस, इट हैपेंस। देयर आर सो मेनी पर्सन अभी भी जिनका नाम मैं भी पहली बार सुनती अच्छा अच्छा, ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम सचिन फ्रॉम बैंगलोर। हूँ। जैसे बैक पेन में बैक बेंडिंग वाले आसन को परफॉर्म किया जाता है, फॉरवर्ड वाले आसन को, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी। मुझे ये पूछना था कि जब किसी को बैक में पेन होता है तो हम उसे फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करवाते हैं, पर हम्म मोस्टली सुनने को मिलता है कि फॉरवर्ड होने से उन लोगों को थोड़ा आराम मिलता है। हम्म। तो इस विषय में जरूर पूछिएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसका एक छोटा सा बस करेक्शन होता है व्हेन एवर वी आर डूइंग फॉरवर्ड बेंड। जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं ना, तो वो एक्चुअल में फॉरवर्ड बेंड नहीं होता, वो स्पाइन सल्जिंग हो जाती है, जिसको मना किया जाता है अगर आपको बैक पेन है। रीजन समझिएगा, बैक पेन का रीजन क्या होता है? अगर हमारी स्पाइन ऐसे सीधी है, हम ऐसे झुक के बैठे हुए रहते हैं ना, तो ये जो दो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, ये आगे की तरफ से ऐसे हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, हम्म इस शेप में आ जाते हैं। हम्म तो आगे की तरफ से जो इनका नर्व स्ट्रक्चर जा रहा होगा, वो कंटिन्यूअसली उसको पिंच करता है, जिसकी वजह से ना पेन स्टार्ट हो जाता है, वो कंटिन्यूअस पेन रहता है। बट इफ यू आर अगेन डूइंग द सेम प्रोसेस, स्पाइन को हमने ऐसे सल्ज कर दिया, तो यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, उनका आगे वाला पोर्शन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीछे वाला एक्सटेंड होता चला जाएगा, तो वो उस हम्म प्रॉब्लम को और बढ़ा दे। बट व्हाट वी आर डूइंग, इफ वी ओपन द चेस्ट, ओपन द शोल्डर एंड देन गो फॉर फॉरवर्ड बेंड, इट विल रिड्यूस द बैक। यानी कि जो एक्चुअल अलाइनमेंट है पश्चिमोत्तानासन का, उसको हम्म नी बेंड करते हुए, नॉट इन लेइंग डाउन पोजिशन, बैठी हुई पोजिशन में नहीं, खड़े होकर। देर इज वन वीडियो ऑन माई पेज, आई हैव अपलोडेड दैट फॉर बैक पेन। वन कैन गो फॉर दैट, ओके, आई विल रेफर द लिंक, बिकॉज आई हैव शोन कि आपका पोजिशन क्या होना चाहिए। यू जस्ट पुट द palm ऑन some wall or something, bend your knees and stretch your buttocks back. That will be the position. Your palm should be front and your whole spine will be lengthened, okay, and then come हम्म front and arch the back like Bhujangasana on the wall. And that is very, very helpful for reducing lumbar bulging also. जिन लोगों को बल्ज की वजह से पेन हो जाता है ना, वो पेन भी उससे बहुत रिड्यूस होता है। हम्म वाई? बिकॉज इन दैट पोजिशन जब हम नी को बेंड कर देते हैं ना, और बटक को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो जैसे ही नी पे प्रेशर आएगा, आपका जो बटक का हिंज पोजिशन है वो बढ़ जाएगा। अगर बटक से आपका हिप हम्म जॉइंट हिंज पोजिशन बढ़ गया, तो स्पाइन अपने आप सीधा हो जाएगा। स्पाइन में सल्जिंग होगी ही तब जब आपका जो हिप जॉइंट है वो टाइट होगा। तो हिप जॉइंट को रिड्यूस करने के लिए, हिप जॉइंट से प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम नी को फ्लेक्स कर देते हैं। नी को फ्लेक्स करने के लिए नी को बेंड कर देंगे। तो उसके पोजिशन है, तरीके हैं, ताकि हम हम्म फॉरवर्ड बेंड के साथ उसका बैक पेन कम कर सकते। जनरली क्या होता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग हम करते गलत तरीके से हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्ड बेंडिंग को मना किया जाता है। एंड दैट इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अगर बैक पेन है और जिस मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये मूवमेंट आप मोर लेस 5 to 8 टाइम्स आप कर लो, ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। अगर 4-5 दिन से कंटिन्यूअसली दर्द है, किसी योगासन प्रैक्टिस की वजह से पेन आ गया है, जैसे जनरली होता है ना कि हम लोग एक साइड से लेग स्ट्रेच करते हैं, हनुमान आसन कर लिया, नटराज आसन कर लिया, और एनीथिंग जिसमें एक लेग पीछे एक लेग आगे रहता है, तो कमर की बैक साइड पे ना पेन आ जाता है, बिल्कुल सेक्रम वाले एरिया। उस पेन को रिड्यूस करने के लिए आपको पेल्विस को बैलेंस करके ये वाला मूवमेंट 4-5-10 बार कर लो, और पेन ऐसे गायब होता है। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द कॉलेज जिनको सेम इश्यू रहा है, फर्स्ट ईयर के भी कुछ हैं, थर्ड ईयर के भी कुछ हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है और वो पेन ऐसे जाता है, उसके बाद उनको याद भी नहीं रहता कि अच्छा पेन था। तो ओके, आई विल जस्ट कंक्लूड कि अच्छा फॉरवर्ड बेंडिंग will improve actually the condition of back pain, but if you do it with correct alignment. हम्म एंड देर आर ओके डिफरेंट स्टेजेस, क्योंकि अगर अगर किसी का स्पाइन पूरा बल्ज होके वो ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो गया है, तो ही शुड हैव टू पर्टिकुलरली अवॉइड, क्योंकि वो सीवियर स्टेज हो गई है। अब अगर बेंड करोगे तो वो बोन टूटने का खतरा है, तो वहां वाला अच्छा कंडीशन अलग है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से लेवल, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल है, तो यू कैन गो फॉर द मूवमेंट, मूवमेंट विल रिड्यूस द। ओके, तो मतलब आप कर सकते हो फॉरवर्ड बेंडिंग, इट्स जस्ट यू हैव टू करेक्टली डू द फॉरवर्ड बेंडिंग। और अगर आपका या एग्जैक्टली। एक्सट्रीम स्ट्रेस एक सीवियर वाला आता है, देन कंप्लीटली अवॉइड द फॉरवर्ड बेंडिंग।
इवन अगर जो सीवियर की हम बात कर रहे हैं वो वाली बात मैं कर रही हूँ, जब L4 L5 स्पेशली जो है दोनों बोन ना मिक्स होके एक ही में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाली मैं बात कर रही हूँ। अगर वैसी कंडीशन नहीं है और L4 L5 के बीच में डिस्क है अभी भी, तो वो मूवमेंट किया जाता है। अच्छा। मतलब बेसिकली डिस्क हर्निएशन इसको बोलते हैं हम ना। ओके, कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sequence is better in daily yoga routines? कि मतलब एक तो होता है कि स्पेसिफिक बॉडी एरिया और मूवमेंट्स को हम टारगेट करते हैं कि आज के दिन हम बैक बेंडिंग पर ही फोकस करेंगे, आज के दिन हम फॉरवर्ड बेंडिंग पर ही फोकस करेंगे, ट्विस्टिंग पे कर लिया। और दूसरा होता है कि वी टेक हॉलिस्टिकली थोड़ा थोड़ा सारी चीजें लेते जाते हैं। तो विच वन मैम डू यू थिंक इज बेटर, कि मतलब एक स्पेसिफिक एरिया को स्पेसिफिक डे पर लें या फिर हॉलिस्टिकली सारी चीजों को इकट्ठा लेके इम्प्रूव करते जाएं डेली रूटीन्स में? अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप सारी चीजों को लेके चलते, इफ यू आर अ नॉन योगा प्रैक्टिशनर, यू जस्ट हैव टू गो फॉर सूर्य नमस्कार एंड ओनली do 6 rounds of Surya Namaskar daily up to 2 months, and you will see drastic changes in your body. There will be so much flexibility in your body. There will be so strength. There will be so much of capacity for breathing, and all will be improved only by 6 rounds of Surya Namaskar daily, not more than that. 6 rounds, and it will take only 6 minutes, not more than 6. फॉर द प्राइमरी स्टूडेंट जो केवल अभी सीख के कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली अगर देखें तो 12 आसन सूर्य नमस्कार में होते हैं। एक आसन में जाना, रुकना और वापस आना, 5 सेकंड का मैक्सिमम टाइम लगता है एक आसन में। तो टोटल 12 आसनों के लिए 60 सेकंड्स का टाइम लगा, यानी कि 1 मिनट में सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा। तो जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जो नहीं अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, जस्ट गो फॉर सूर्य नमस्कार, बिकॉज सूर्य नमस्कार इज कंप्लीट पैकेज फॉर योर होल बॉडी. There will be shoulder movement, extension, flexion. There will be spinal movement, extension, flexion. There will be neck movement, in Ashu Sanchalan, up, down. All the joints are covered in Surya Namaskar, and that is very, very helpful. Okay? And if you say कि हम एक लेवल पे हैं, like beginner level को हम क्रॉस कर चुके हैं, intermediate level, then again involve Surya Namaskar daily, on daily basis, because 5 minutes are not a bad time. Just warm up. Start your warm up with Surya Namaskar every day. That will be best, more than best. After doing Surya Namaskar, your joints will loosen up. Okay, and then you can start working on the strength building, and then you can focus on anything. Like if you have to go for palm balance, go for it one day. If you have to go for back bending, go for it one day. And you can indulge your practice with Surya Namaskar. 5-6 राउंड जो हमारा एक सेट है उसको कंप्लीट किया, उसके बाद अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग का आपका डे है, तो आप क्या कर सकते हो, सूर्य नमस्कार के अंदर जो आपके पाम प्रेसिंग वाले जो पोजिशंस हैं उनको होल्ड करना स्टार्ट, उनके वेरिएशंस ढूंढना शुरू करो। जैसे पर्वतासन, पर्वतासन से जंपिंग करो, अश्व संचालन में, अश्व संचालन से लेग चेंज करो। ऑल दे आर व्हाट डूइंग इज दे आर गिविंग द प्रेशर टू पाम, तो पाम को स्ट्रेंथन करे। किसी दिन अगर बैक बेंडिंग करनी है तो सूर्य नमस्कार में वेरिएशन चेंज कर दो, अश्व संचालन से चंद्रासन में आ जाओ, भुजंगासन में आओ तो वहां पे पूर्ण भुजंगासन ट्राई करो, भुजंगासन में आओ तो वहां से धनुरासन ट्राई करो। तो मतलब उसमें हम वेरिएशन डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट कि आज हमें पर्टिकुलर किस चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर बिल्कुल बिगनर है वो पर सूर्य नमस्कार, बिगनर से थोड़ा इंटरमीडिएट है, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करके उसके साथ अपने वार्म अप को इंडल्ज करो जिस पर्टिकुलर एरिया पे हमें फोकस करना है, एंड आफ्टर दैट go for the final position only, because whenever there is no target, your practice will not give you. Just set the target. अच्छा ठीक है, आज हमें बैक बेंडिंग करनी है, बैक बेंडिंग के बाद फाइनली क्या करना है, बैक बेंडिंग खाली वार्म अप नहीं करना है, बैक बेंड करने के बाद select any 2 or 3 positions which you have to practice for at least 1 month. Every time you do back bend, practice them, and measurement is very, record your videos, keep the mirror in front of you, or just say someone कि एक पिक्चर क्लिक कर दो मेरा, because that will be giving you the actual idea कि हम किस लेवल पे, and when you will be recording yourself and you will be clicking the pictures, don't upload it anywhere,
if you are hesitating, just watch it by once. Compare your pictures before and after, and you will see कि आपका practice actual में कुछ improvement दे रहा है या नहीं. And if you will actually gain that improvement here ना, तो एक motivation खुद को अंदर से मिलता है कि नहीं हमें और करना चाहिए. और प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हेजिटेट करते हैं. जनरली व्हाट आई फील, social media is having so many bad impacts, but with that bad impacts, the positive also come. And I see the positive side of that social media. Because when you upload something, people give the reactions on that, and they go for searching, they will ask you something. You have to increase your knowledge for that, right? Basically you are confronting people, और जब ये confrontation के लिए हम अपनी knowledge को increase करते हैं ना, you will get the responsibility कि नहीं भैया जो हम बोलेंगे वो सही होना चाहिए. तो वो सही तो तब होगा ना जब हमने खुद प्रैक्टिस किया होगा, हमें खुद पता होगा. खुद ही नहीं पता होगा तो हम क्या जवाब दें. तो वो कन्फ्रंट करना जरूरी है. हम वो कन्फ्रंट नहीं करते, उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, है ना. तो बिगिनर्स go for Surya Namaskar only, 6 rounds per day, and intermediate ones start with Surya Namaskar. Set your goal for every day कि आज हमें क्या अचीव करना, and keep practicing that until you achieve. Do not set the time period of your practice कि 1 घंटा practice. Set the achievement goal of your practice कि आज तब तक practice करेंगे जब तक achieve नहीं कर लेते. Okay, if I share you my experience of last week, I was not able to do handstand. Recently, I uploaded a video of handstand on my page because I have find out a technique by which one person whose strength is not on shoulders cannot lift the leg up. They can feel how handstand is being feeling when we are upside down, how the body will feel on the palms. So that is by the support of a chair. And when I did that, it was the next day of my birthday. So I feel like I have gained some. And very next day, in the 3rd of September, I practiced that thing for continuously 2.5 hours. And I just forgot the time. From morning 8 to 10:30, I was continuously practicing the same thing. Because I was just recording myself, watching myself, correcting each and every little points. And what I gained in the last is I was so happy that my shoulders was very feeling, yes, you are strong, you are not weak. Okay. So set the goal of your practice, not the time practice, if you are intermediate. And if you are feeling you are advanced, because no one is advanced. That's why I use, if you are feeling that you are an advanced practitioner, try to understand the meaning of it. Because we say कि हम advanced practitioner, but we don't understand कि advanced practice का meaning. If you are still stuck in asana practice, you are not advanced practitioner. If you are still stuck at pranayama practice, you are not advanced practitioner of yoga. Okay. If you are beyond asana, pranayama, and all the social elements, then you are practicing the advanced. That is my approach. Okay. तो मैम वो 2 घंटे वाला आपने बताया था, मतलब 2 घंटे आपने जस्ट यू प्रैक्टिस दैट अपसाइड डाउन इन्वर्टेड पोस्चर हैंडस्टैंड वाला 2 घंटे मैम Yeah. ज्यादा नहीं होगा? 2 घंटे बहुत तो जाता है ना. No. 2.5 hours, not 2 hours. 2.5. God, impressive. And Very impressive. yeah, I was like 2.5 hours के बाद भी मुझे अचानक से इसलिए क्लिक हुआ कि टाइम क्या हो रहा है. बिकॉज 11 o'clock से बायोमैकेनिक्स की क्लास होती है एमएससी फर्स्ट ईयर वाली. एंड 10:30 का मैंने अलार्म सेट किया हुआ है कि इन केस कभी अगर मैं भूल जाऊं या कुछ हो तो अलार्म क्लिक. आई जस्ट वॉच द टाइम एंड आई वाज लाइक 10:30 हो गए. 8 बजे से शुरू किया था, 2.5 घंटे हो गए, मुझे खुद को नहीं पता चला कि टाइम. एंड रीजन वॉज दैट कि I was very focused on myself, on my practice, that I even forget कि कितना टाइम हो गया. And when we are worried ना कि कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम बचा है, 10 मिनट बचा है, 1 घंटा पूरा, we are not practicing yoga. क्योंकि दिमाग तो नहीं है ना उस पर पूरी तरह से दृढ़ता से. अगर आपका फोकस है एक्चुअल में कि नहीं भूल जाओगे, सब भूल जाओगे. जब एक्चुअल में मतलब यहाँ से प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगा. आई थिंक सम पीपल विल लाफ इफ आई से
generally when I started my palm balancing journey, I will say, I think it was 2 years back, जब मेरा बकासन होना स्टार्ट हो गया था, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। तो कभी रात को 2 बजे आँख खुली, मैं उठ के एक बार ट्राई जरूर करती थी। मैं बोलती थी यार एक बार करके देखती हूँ, होना चाहिए। नहीं होता था, गिर जाती थी, मैं फिर सो जाती थी। मतलब 1-2 बार मैं ट्राई करती थी, उसके बाद फिर मैं सो जाती। और लगभग ये मेरे साथ 6-7 महीने तक चला कि मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मैं थक गई, मैं उठ के फटाफट नीचे गई, मैंने एक बार बकासन प्रैक्टिस करा, 2 बार किया, 3 बार किया, थोड़ा सा पसीना वसीना आया क्योंकि होता तो था नहीं, गिर जाते थे, कई बार माथा फूट जाता था नीचे। तो फिर मेरे को लगता था चलो अब कल कर, कल किसी काम के बीच में याद आ गया, तो वो मतलब कंटिन्यूअसली रहता था कि नहीं करना है करना है। तो 4-5-6 महीने बाद टेक्निक मिल गई, बॉडी ने अचीव कर लिया। तो उसके बाद लगा कि हाँ नहीं, अब इसको और बेटर करना है। कैसे बेटर करना है? अभी एल्बो बेंड हो रखा है, तो अभी एल्बो को सीधा करना है। अभी घुटना एल्बो के पास, तो घुटने को और ऊपर लेके आना है, उसके लिए कोर की प्रैक्टिस है। तो वो स्टेप बाय स्टेप वी शुड हैव टू कीप। Okay. Okay. Very interesting. I'm very interesting and very motivating and inspiring at the same time. I don't think मतलब इतना डेडिकेशन मैंने रियलिटी में BK सायंगर जी के अलावा और मतलब इतना किसी में अभी पर्सनली नहीं देखा नहीं, है। ऐसे नॉट किडिंग बहुत मैम, बाय लोग, द वे। नहीं ऐसे एक्चुअल में हाँ होता मैं है बोली शिवा, बोली। देयर आर सो मेनी पीपल, बट पॉइंट ये होता है कि हम कुछ ही लोगों के कांटेक्ट में आ पाते हैं, एंड वो कुछ लोग हमें ऐसा लगता है कि शायद वही हैं जो सब करते हैं, बट ऐसे बहुत। और कहीं ना कहीं हमारा जो एक कॉन्शियस लेवल है ना, हमारा चेतना का जो स्तर है, वो उन लोगों से जुड़ा हुआ है इंटरनली, वी कैन फील देम। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि जैसे जैसे ना आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता रहता है, आपका कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, कि जिनको हम योग में लोभ क्रोध मोह इस नाम से जानते हैं, ये वाली चीजें अनकॉन्शियसली आपके पास से छूट जाती है। बेसिकली यहाँ पे मैं एक नाम और यूज करूंगी, तो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब भी लगेगा, बट जो हम षट चक्रों की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मूल आधार चक्र, तो मूल आधार चक्र ठीक है बॉडी में कहीं होगा, आई हैवंट सीन दैट एनी टाइम, मुझे नहीं पता है कि नहीं, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो चक्रों का सिस्टम बताया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, मूल आधार चक्र की हम जब बात करें तो जीवन के जो हमारे मूल बेसिक्स हैं, जैसे कि जो हमारे नेचर में रहता ही है, गुस्सा भी आएगा, प्यार भी आएगा, किसी के साथ हमारा अटैचमेंट भी होगा, डिटैचमेंट भी होगा, रोएंगे भी हंसेंगे, ये सारी चीजें लाइफ की बेसिक ऐसी है ना, जिसमें 90% ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर स्टक, वो उससे ऊपर ही नहीं बढ़ पाते, वो सोच ही नहीं पाते कि हम है कौन, हमारी लाइफ का मकसद क्या है, हम जो काम कर रहे हैं उससे हम क्या गिव कर सकते हैं, मतलब वो एक अपर लेवल जो है वो नहीं। सो व्हाट आई थिंक इज, मे बी मूलाधार, इफ एनी वन, उसकी जो एनर्जीज है वो मूलाधार में फंसी हुई, मूलाधार चक्र में ज्यादातर, तो वो जो जीवन की जो समाज से रिलेटेड चीज उनमें फंसा हुआ रहता है, व्हाट आई फेल्ट। जब हम योग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अनकॉन्शियसली ही सही, हमारा वो जो एनर्जी लेवल है ना ऊपर की तरफ बढ़े, मूलाधार चक्र से स्वादिष्ट मणिपुर अनाहत। अब अनाहत चक्र की अगर हम बात करें, जो हार्ट प्लेस पर्टिकुलरली, अनाहत चक्र का जो फंक्शन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, क्या बता कि हेटेड से इंसान लव की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, वो फॉरगिवनेस की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है। तो अनाहत चक्र में अगर किसी की ऊर्जा है, तो वो व्यक्ति शायद, जो हम बोलते हैं ना हमारे दिल से बात आ रही है, मतलब वो अच्छी चीजों की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसका चेतना का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और जब हम सहस्रार चक्र की तरफ आते हैं, मस्तिष्क की तरफ आते हैं, तो ये क्या है, ये अगर आप डीप डाउन फील करोगे ना, नो वन एवर वांट्स टू हर्ट एनी अदर, बट दे आर डूइंग ड्यू टू सम मिसकंसेप्शंस, ड्यू टू सम बैड अपब्रिंगिंग और एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे वो जो पूरा भर जाता है, अगर कोई इंसान यहाँ तक पहुंच जाए, नीचे से ऊपर, ऊपर से स्टार चक्र में अपनी ऊर्जा स्थापित करता है, तो क्या होगा, हमारा जितना भी थॉट प्रोसेस है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। अब ये जो ऑर्गन है, ये इस फिजिकल वर्ल्ड को उस नॉन फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड हमारा थॉट्स है, इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स है, बस
no one can define the feelings physically. What you feel for your mom, you cannot define it physically. If your mom is at another place, you are at another place, and she's suffering from fever, she's reminding you कि अभी शिवांग के पास में होना चाहिए, याद आ रही है. You will feel that instantly. Even though you cannot convert that feeling, आप उसको convert नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या feel. You will feel कि कुछ अजीब सा हो गया है, अचानक से मेरा माइंड डाइवर्ट सा हो गया है, मन नहीं लग रहा है किसी काम में. फिर मम्मी को कॉल करोगे तो पता चलेगा अरे मम्मी की तबीयत खराब है, उनसे बातचीत हो जाएगी तो मूड अपने आप से. तो ये क्या है, ये जो फीलिंग का इंटरकनेक्शन है, दैट इज नॉन फिजिकल. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज ऑल फिजिकल, बट देयर इज कनेक्शन इन द फिजिकल एंड नॉन फिजिकल. So when we go more in our practice, when we go deeper in our practice, when we lift the level of our consciousness upwards, then we can activate this. We can activate Agya Chakra, we can activate Mooladhara Chakra, we can activate Sahasrara Chakra, and all the functions of the brain, which is your cognitive function, which is your vision, your hearing capacity, can enhance everything. And you can just, like, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत छोटी सी बात से हमने शुरू किया था कि हमने डायाफ्राम की कंट्रोल की बात करी थी. मसल है एक छोटा सा, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर भी पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर. इफ यू somehow be able to control your brain and to control a particular part of your brain, जैसे हमें पता है कि पीछे वाला जो पोर्शन है वो आपके विजन को कंट्रोल कर रहा है, आगे वाला जो है ये पूरा आपका थिंकिंग और कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है, फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला, ये किसके लिए, आपका जो बिहेवियर एस्पेक्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. इफ somehow you will be able to shut down one part of your brain, you can consume all the energy into another part. And if you are giving all the energy of your body into the visual cortex, you can see as far as you can, which is known as दूरदृष्टि, जिसको हम योग में वो क्या बोलते हैं, इसको विभूतियों का नाम देते हैं ना, कि हाँ, दिव्य you दृष्टि. will get some, हाँ, दिव्य दृष्टि टाइप है ना. कैसे, अभी हमारा पूरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है 36 जगह, हाथ भी है, पैर, दिमाग. अगर किसी तरीके से हम पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर पाए, सी यू कैन फील दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी. जब भी हम नौकासन करते हैं ना तो कोर पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, प्लान पोजिशन में होल्ड करो, कोर पे कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है. तो वो कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि उस जगह पे एक्टिवेशन हो, राइट. तो ब्रेन का पूरा फोकस जब कोर पे है तो कोर वार्म होगी, कोर की मसल्स एक्टिव होंगी, कोर का जो फैट है कम हो जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलरली उस एरिया को बिल्ड कर रहा है, राइट. वैसे ही अगर हम किसी तरीके से अपने ब्रेन के किसी एक पोर्शन पे फोकस कर पाए, उसको एक्टिव कर पाए, तो उसके जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. तो अगर मैंने अपना पूरा एनर्जी, पूरा ब्रेन का एनर्जी अपने विजुअल कॉर्टेक्स पे लगा दी, विजन कॉर्टेक्स पे लगा दी, फोकस कर दिया, isn't it possible कि मैं विजन कैपेसिटी को एनहांस कर पाऊं अकॉर्डिंग टू माई विल, जितना दूर का चाहूं उतना दूर का देख सकूं. संभव है, बिल्कुल संभव है. बट द पॉइंट इज दैट कि वो एक्सप्लेनेशन हमें उस चीज का ऐसे नहीं मिला. हमने योग में पढ़ा है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, हमने इधर ये पढ़ा है कि ब्रेन हमारा जो कॉर्टेक्स तो यहाँ होता है, ऐसा होता है, बट वी डू नॉट नो हाउ टू कनेक्ट. एंड देयर इज द मिसिंग लिंक, जिसकी वजह से जो लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल है वो टेक्निकलिटीज में रह जाते हैं, जो एनिशियंट है वो एनिशियंट पे रह जाते हैं. दे डू नॉट कंबाइन द हैंड टुगेदर, और वो लोग आधे आधे रह जाते हैं. जैसे हम बोलते हैं शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही अगर मॉडर्न चल रहा है तो वो ये भी तो सोचना चाहिए ना कि वो लोग भी इसी कॉस्मोस में ट्रैवल कर रहे हैं, इसी कॉस्मोस का हिस्सा है. तो कॉस्मोस विल बी गिविंग द एनर्जी टू देम आल्सो इफ दे आर डूइंग देयर, राइट. तो अगर उन लोगों को भी कुछ इंडिकेशन मिल रहा है वो किसी वर्क को प्रोसीड करें, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर अस, दैट इज नॉट फॉर नेगोशिएटिंग आवर ओल्ड वर्क. ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, जो मॉडर्न लोग हैं वो अगर एक बार को एनिशियंट को एक्सेप्ट कर ले, एनिशियंट वाले कहेंगे मॉडर्न वाले सब बकवास, कुछ फायदा नहीं, सब बकवास, कुछ नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं. आई बिलीव इन दैट कि देयर आर सो मेनी, इफ यू विल रीड पर्सन, अगर कोई बैचलर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से, please try to read Sir Roger Penrose. He is a physicist. He got the Nobel Prize in 2020, I think. Yeah, for 2021 maybe. I don't remember correctly. And he has done immense work and commendable work
he has been explaining your body on the basis of your DNA, and he is trying to connect the DNA with the quantum uh, energy. Okay, there is one book written by Fritz of Kafra, The Tao of Physics. Very commendable. It's like there are some books की जो हमें लगता है ना कि यार कुछ तो मिसिंग है, कहीं पे तो गैप है, वो गैप को फिल करते हैं. There is one writer, Amit Goswami. You will find his book in Amazon, and it is the name, The Soul, Quantum Science of the Soul, like something like this. Okay, so there are so many persons who have done the same thing, but the point is that कि हम जब योग के बैकग्राउंड से आते हैं तो हम लोग महर्षि ऋषि सबको पढ़ते हैं. We do not go on the modern scientists. जब हम modern scientist साइंस से आते हैं वो so we go for Sir Roger Penrose, we go for some modern scientists, but we do not read. That is our mistake. We should have to connect them. We should have to get them. That is our work as a young age yoga practitioner. ओके वैसे तो काफी सारे क्वेश्चंस और भी थे बट आई थिंक अभी एक या दो क्वेश्चंस करके वी शुड एंड द सेशन. ऑलरेडी 1 hour हो गया है. Okay. लगा नहीं Okay. 1 hour हुआ है वैसे. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा मैम बाय द वे ये वाला आपने एंशियंट वाला टॉपिक छेड़ा था, एंशियंट वर्सेस मॉडर्न वाला योग का. तो इस एंशियंट रियल योग को लेकर आप पर्सनली किसी को फॉलो करते हो, किसी गुरु को? पहले जब मैं था तब मुझे सदगुरु ही थोड़ा दिखते थे कि जो मतलब जो टेक्निक्स को दिखाते हैं उन्हें प्रॉपर काइंड ऑफ थोड़ा फॉलो करवाते हैं. आपको मैम ऐसे कोई दिखते हैं कि जो मतलब एंशियंट रियल योग को अभी मॉडर्न जमाने में करवाता हो या अप्रोच करवाता हो, फिर आप उन्हें फॉलो करते हो? एक्चुअली पता है मेरे साथ एक जो बैकेट मुझे लगता है, people will laugh actually. No ma'am. I am No, not. I am very internally. I want to get a guru actually. जो गुरुकुल परंपरा के समय पे जो एक वो होता था ना कि आपके एक गुरु हैं, वो आपको पूरा जीवन का सार बताते हैं, आप उनके अंदर रहते हैं, आप उनसे सीखते हैं. I never get that thing in my life and I'm missing that thing. I don't even know कि maybe I feel that कि शायद मेरी लाइफ में कभी मुझे मेरे मिलेंगे. आई डोंट नो कि मिलेंगे भी. आई थिंक मेरा जो लाइफ का जर्नी चल रहा है दैट इज टू फाइंड आउट हु इज माई गुरु एंड हु आई शुड हैव टू फॉलो. बिकॉज बहुत सारी चीजें आई नो, बहुत सारी चीजें आई एम लर्निंग, बट स्टिल देयर इज सम मिसिंग पॉइंट. लाइक जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के लिए भी अगर आप देखें तो वो एक टाइम पे हिमालय गए, उन्होंने अपनी साधना करी, एंड आई पर्सनली वांट टू डू द सेम थिंग, मतलब लाइक सिमिलर कि मैं उस साधना को उस तरीके से करना चाहती हूँ. बट अगेन ड्यू टू आवर physical presence and due to so many responsibilities as a human being in this life, we need to attend that position right now कि हमें अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है एंड वी कैन नॉट स्किप दैट पार्ट. बट हु नोस, अगर लाइफ में कोई ऐसा फेज आया, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ टर्निंग पॉइंट व्हेन यू जस्ट गो, बिकॉज दैट इज द राइट टाइम टू गो. सो अगर लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि दैट इज द करेक्ट टाइम टू गेट माई गुरु, आई विल जस्ट गो. टिल नाउ कोई ऐसे इनिशिएट को मैं पर्टिकुलर फॉलो नहीं करती हूँ, बट या आई वॉन्ट, I read a lot of persons, I read a lot of people, and I connect them somehow. किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ. उनकी लाइफ इंसिडेंट मेरे लाइफ इंसिडेंट से बहुत ज्यादा मैच करता है, कहीं 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 बिखरा हुआ है ना. तो मे बी पॉसिबल आई विल गेट माई ओन वेरी सुन. I don't know why ma'am you said in the beginning कि people will laugh, but this is a very relatable feeling again, because अगर कोई भी थोड़ा सा भी योगा की फील्ड में है और थोड़ा सा भी सीरियस लेता है, उसके अंदर थोड़े टाइम बाद अपने आप ही डिजायर आ जाती है that he or she wants a guru. So yeah, that was very relatable again.
नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, जनरली जो हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि वी शुड एक्सहेल while doing a forward bend, and जब बैकवर्ड बैंड करते हैं तो वी शुड इनहेल. बट काफी सारी योगा प्रैक्टिशनर्स हैं हु फील लाइक कि जब पीछे जाते हैं तो फिर इनहेल करने से वो और ज्यादा डीप पर बेंड कर सकते हैं. तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? That instruction, according to me, is wrong. That inhale and go back. Because in the process of going back, you have to inhale. But when you reach the position, you have to exhale actually. Because anatomically, if you see, your spine is extended back. Your lungs are completely extended. Lungs are like balloon. अगर आपने एक balloon को ऐसे करके stretch कर दिया है maximum, and then you will inhale, there is 90% possibility कि ये फट जाएगा. If you will inhale deeply after back bend. Okay? But if you are you have a balloon जो फूला हुआ है, right? You are inhaling, inhale करते करते आप इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हो तो ये इस तरह से आर्च हो गया, ठीक है? ये हमारा लंग वाला पोर्शन. एंड आफ्टर गोइंग इनटू बैक, इफ यू एक्सेल, देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन, और ये बलून जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सेल होगा, तो इसका लेंथ और बढ़ सकता है, तो आप और बैक बेंड. तो टेक्निकली अगर देखा जाए, व्हाइल यू आर डूइंग लाइक हस्तोत्थान, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, इनहेल करते हुए हाथों पर खींच सकते हैं. बट व्हेन यू हैव टू bend the back, exhale and go for the back bend. You will find tremendous changes in your back bending journey if you start exhaling while you are going for back bend. And तो when you are ये doing वाला जो forward bend, exhaling हाँ while continue. going backward bend, it applies कि थोड़ा सा बैकवर्ड बैंड में हमें इनहेल करना चाहिए या फिर हमेशा ही बैकवर्ड बैंड में एक्सहेल करना चाहिए? Back bend में, if you just practice it once, okay, and feel from yourself, then you will know what I am saying. Because Yeah, I there are personally feel that. What you're saying, there are ma'am, so I many personally feel things. that. तो दैट विल बी वेरी गुड कि हम इनहेल करते हुए प्रोसेस में जाएं. बट जब हमें ऐसा लगे ना कि अब इसके ज्यादा हम और नहीं कर पा रहे, एक्सेल, जस्ट एक्सेल, योर बॉडी विल रिलैक्स मोर एंड विल बेंड. Okay. And when Okay. you are doing forward bending, again we say exhale and forward. But if we are doing like this forward bend, if you exhale, you will go touch your head on the knee. But if you inhale, hinge the hip joint, lengthen your spine front, then your forward bend will be much. So there is like contradiction. Okay. So जो ये हमारा, काफी न्यू थिंग थी या ये हाँ, पहली बार, मतलब ये मैं ऐसे सुन रहा हूँ. या मैं नहीं, एक्सप्लेन मोर अबाउट दैट. हाँ, ये तुम प्रैक्टिस करके देख सकते हो. इफ यू हैव सीन सम अष्टांगा प्रैक्टिशनर जो पश्चिमोत्तानासन को करेक्ट अलाइनमेंट में करते हैं, दे नेवर एक्सटेंड द एल्बो आउट, दे विल डूइंग द एल्बो इन, opening the shoulders down and keeping the chest open. Why they are keeping the chest open? To inhale properly. And they are not touching the head down. They are lifting the chin front and watching the toe of the thumb. Why? Because of, if you are watching front, your chest will be open, then you can stay in that position much longer. And for lengthening the spine, when your spine is downward, you have to inhale and then slowly. Because किसी भी position में you cannot completely hold in inhalation and exhalation. There will be a minor breath in and out, in and out, in a rhythm. There will always, and there should always be. Otherwise, you will not be able to hold the. But yes, for going into the position, reaching the particular point, and then changing the breath is very, very tremendous. Like you will feel, you will see that your practice is flowing down. So if you are doing back bending, just exhale. Okay. After reaching to your maximum position, do not inhale. Okay. Okay. Cool. Very insightful, Okay. ma'am. Next question. NYSF की कंपटीशन के आसन जिनमें इतनी हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या वो सही है बॉडी के लिए? Yeah, exactly. But
not for everybody. Why I said that? Because they are showing the level of their practice. If you are not on that level of practice and you are going to competition and just pushing your body only to win the competition, you are wrong. Because competition is to judge that कि आपका प्रैक्टिस लेवल कितना ऊंचा है. अगर आप 10 साल से 12 साल से 30 साल से प्रैक्टिस में है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर ली. अगर तब भी नहीं कर पा रही है तो आप कहीं पे कुछ गलती कर रहे हैं. बिकॉज यू सी देयर आर सो मेनी पीपल इन सोशल मीडिया जो मतलब दिखने में बिल्कुल ऐसे होंगे हट्टे कट्टे, बिल्कुल जिम जैसी बॉडी होगी, शोल्डर्स, बट दे कैन डू बैक बेंडिंग, दे कैन डू तिम्पासन, एंड दे कैन लाइक हमसे ज्यादा अच्छा वो कर सकते. व्हाई इज दैट? क्योंकि उनका प्रैक्टिस का लेवल कंटिन्यू है, बहुत सालों से कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. तो वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के कारण ऑटोमेटिकली उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा. बट इफ आपको 1 साल 2 साल प्रैक्टिस के लिए हुआ है और आपको कॉम्पिटिशन जीतना है, उसके लिए आप जबरदस्ती बॉडी को तोड़ मोड़ के खींच तान के वो आसन लगाओगे तो रॉन्ग. इट इज नॉट the mistake of competition holders, it is the mistake of yours if you are doing this. Okay, so वो आसन बॉडी के लिए सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक बॉडी के लिए सही, उस बॉडी के लिए सही है जो उस प्रैक्टिस के लेवल पे हो. और अगर अभी तक आप वहां नहीं पहुंचे हो, गिव योर सेल्फ द टाइम. कॉम्पिटिशन के भागा थोड़ी जा रहा है. आज से 4 साल बाद खेल लेना, दूसरी एज ग्रुप में खेल लेना. अभी तुम जूनियर में खेल रहे हो, फिर सीनियर में खेल लेना. सीनियर में भी नहीं खेल पाओगे तो सीनियर में खेल लेना. 60 साल की उम्र में खेल लेना, कोई मना कर रहा है. तो वो थिंकिंग पैटर्न की बात है, माइंड की बात. हाँ, तो मतलब ये एसेंस में कि ये हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी अगर तुम तोड़ मरोड़ के कर रहे हो, मतलब बॉडी को लिमिट से ज्यादा ही बाहर जा रहे हो, तो इट्स बैड. बट अगर तुम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ जा रहे हो, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, देन देयर आर नो इश्यूज. या ओके, या लास्ट क्वेश्चन मैम. कैन यू शेयर सम रिसोर्सेज टू द ऑडियंस जिसके थ्रू वो अपनी टेक्निकल नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अबाउट योगा? हाँ, sure. There is a book, Anatomy of Yoga. I don't know the name of authors because बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हो तो वो एनाटॉमी वाले जो बुक्स है उनके नाम मुझे याद नहीं है. बट यू कैन सर्च दैट. एनाटॉमी ऑफ योगा इज वन बुक. Biomechanics of Yoga Practices by Carol Oatis. Caroal Oatis, something name is like. So these two books are very very helpful. बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको टेक्निकली अपना योगा प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है, इवन दो इफ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी बाय प्राणायाम, समवन हैज मैसेज्ड, आई जस्ट सॉ दैट. तो प्राणायाम से फ्लेक्सिबिलिटी 110% इम्प्रूव होती है इफ यू आर इम्प्रूविंग द पैटर्न ऑफ योर ब्रेथ एंड डूइंग एक्चुअल practice of pranayam for a longer time. You will find your body will be very light, very flexible. Okay, and that is also explained on the basis of anatomical structure, anatomical physiology of your breathing. Okay, if you understand the things anatomically on physical level, then you can go beyond. Okay? तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि टेक्निकली हम लोग को थोड़ा इम्प्रूव करना है या कुछ चीजें जरूरत है, इट विल टेक टाइम. फर्स्टली एक्सेप्ट दिस. 2 से 3 साल कहीं नहीं गए आप. ठीक है, ये मान के चलो कि 1 महीने में तो बिल्कुल भी. पहला साल जनरल एनाटॉमी को पढ़ने का कोशिश करो, जिसमें आपका स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं, वो सारा मतलब विजुअली यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करो. यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, जैसे कि एक मेडिकल मीडिया करके यूट्यूब पे चैनल है, एक एनाटॉमी डॉक्टर्स करके एक चैनल है. वो लोग क्या करते हैं, 3D एनिमेशन डालते हैं एनाटॉमी को इजी वे में समझाने के लिए, है ना. एक मसल डॉट वर्क करके एक चैनल है. तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो 3D एनिमेशन यूज करते हैं. उन 3D एनिमेशंस को देख के अपना एनाटॉमी बेस पहले वो करो, स्ट्रॉन्ग करो. 6-7 महीने एनाटॉमी, प्योर एनाटॉमी को दो. ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ योगा पढ़ो, 6-7 महीना उसमें जाएगा. उसके बाद बायोमैकेनिक्स ऑफ योगा प्रैक्टिस इसको स्टडी करना, या फिर
एक और मैं भी उसका नाम I'll just message it if I remember. अभी मैं उसका नाम completely भूल गई हूँ. Which is basically yeah योगा प्रैक्टिस फॉर डॉक्टर्स, इस तरह से करके एक बुक है. तो ये 3-4 बुकें हैं जिनको आप थोड़ा 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 रीड करते रहो तो ट्रेमेंडसली आपकी जो नॉलेज है विल इनहांस एंड यू विल ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट. जनरली हम तो सुनते हैं करते हैं और जो बुरा है वो सफल सफल लगता है. हाँ, एनाटॉमी ऑफ योगा बुक बाय आर्मी मैथ्यूज. यस शिवम, इट इज द राइट. इट विल बी गुड. ओके okay, any other question? Shivang, am I audible? Hello. Shivang, you are not audible to me. Is there anyone else? Shivam, can you Yeah, see that? yeah. Am I audible Okay, now? okay. Yeah, Yeah. it's perfect now. या मैम, हाँ, और भी क्वेश्चंस थे हमारे पास, हमें काफी सारे क्वेश्चंस थे, बट आई डोंट थिंक अब लेना चाहिए. 1 hour 30 हो गया, आपका इनफ टाइम ले लिया है. एंड Okay, you आई थिंक वी you can वी just वुड store the question for next session. Okay. यस मैम, स्टोर है. या मैम, तो हम मे बी शायद नेक्स्ट सेशन प्लान कर सकें, बिकॉज इतने में ही मतलब आपने इतना सारा कवर कर दिया एंड अभी भी काफी कुछ रह भी गया. तो we might next plan another session with you. And it was Sure. very, very lovely, ma'am, having you here. You don't know how much I enjoyed, and you don't know how much I'm sure the audience must have enjoyed having you here. Or it was really, Thank you so really much. nice having you. Thank you so much. Thank you so much. And there is one last line from me, everyone. Please, 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 don't only listen, don't only watch, don't only fascinate. Just go for it and try it once and you will see कि वो एक बार का जो ट्राई होता है ना वो लाइफ को बहुत बदल के. So just try it once. Anything if you can do, if you can't do, just try it once. क्योंकि ट्राई करोगे ना तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है, हम सोचते क्या है और होता क्या है. ठीक है. तो okay everyone, it was very nice session and there was very I will say good question from good people, because a good question is very very important for a good and healthy discussion, right? So everyone Yeah. have a great night and I think it may be possible जितने लोगों ने सुना उनके दिमाग में आज रात को यही सब घूमेगा, अरे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है ना. Okay, so Yeah. okay, so Shivang, और can we बाकी भी conclude then? इसमें भी, yeah, we should conclude. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much, ma'am, again for being here. Goodbye. Thanks Good to night, you ma'am. guys. Thanks to you guys. Good night. Good night. Have a good night.